Hi, welcome to DC Podcast. In conversation with us today is the lovely Surya Sharma, an actor who's known for his intense and nuanced performances in Hostage, Andekhi, Ye Kali Kali Aankhein, and now alongside Konkana Sen Sharma, he stars in Search the Naina Murder Case. Welcome, Surya. How are you today? I'm good. Thank you so much for such great introduction. You're welcome. You grew up in Hamirpur in Himachal Pradesh and you found your way to India's thriving OTT space. What were some of the early struggles, moments of clarity that helped you carve your path as an actor? There are many things. Yes, I've grown up in Himachal, district Hamirpur. I was there till my ninth standard, and then I shifted to boarding school in Chandigarh. Then I completed my graduation, and then I went back to my family business. And then my father planned me to send me to Bombay, and that's how it happened. But after coming to Bombay, there's a lot of struggle going on, जो कि वहाँ आके ही पता चला. And I did diploma, so मैं उसी के लिए आया था यहाँ पे. And coming back to the point, like कि किस तरीके से dealing with struggle, rejection, and then still finding a way out to this industry OTT platform. It was hard, but yes, मुझे थोड़ी थोड़ी चीज़ों का experience था in my boarding school. When you study in a boarding school, you have the ability to make decisions in life, and वो कहीं ना कहीं आपको life सिखा देती है. सो यस, और थ्रू आउट माई जर्नी मैंने एक ही चीज़ सोची थी, जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी मैं उस पर हाँ बोलूँगा. ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक काम करना, कई बार होता है कि अच्छा वी डोंट हैव वर्क एंड वी शुड डू इट बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग वी हैव इन आवर हैंड. तो ये यही सब चीज़ें थी कि चॉइसेस, फॉर मी चॉइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई मेक चॉइसेस. एंड यस, मतलब आया मैं फिल्में करने था बट एंडेड अप डूइंग ओटीटी बिकॉज ओटीटी उस टाइम पे ही ये एक जो प्लेटफॉर्म था ये ओपन हुआ था. And people loving me on OTT, and what else I want, and like they just give me so much love and support. They watch my work. Wow, okay. So your breakout role, so to say, would be Rinku Atwal. Right, In Andekhi. It gave the audience a taste of your intensity and depth, like the way you go into your characters. right. Looking back, how did that experience shape shape the kind of performance that, you do and the kind of performer you've become? I don't think much about this because every time I do some project, my aim is to give my 200%. And how can I become better with my skills, because competition is so high. So there's no chance of a single mistake. Though mistakes are beautiful, you should learn from them, but Yeah. वो saying जितनी प्यारी लगती है उतनी reality में होती नहीं है. And I just give myself to my characters. That's what all I can say. I try to inculcate some part of me in my character so that the audience कहीं ना कहीं relate कर सके, कि वो एक human बनना चाहिए. He should not look like a villain. He should not look like a hero. वो इस तरीके का कैरेक्टर दिखना चाहिए जैसे ऑडियंस डे टू डे लाइफ में लोगों से मिलते हैं, बात करते हैं. दे गो थ्रू सो मेनी थिंग्स, सो दे शुड रिलेट. So, something that I've seen that is common in the roles you played in, let's say, Hostages or Ye Kali Kali Aankhein and Andekhi to that fact, your characters often live in moral gray zones. Like वो या, अच्छे भी हैं, वो बुरे भी हैं, वो बीच में कुछ चल रहा है, right? राइट. Um, Men shaped by silence, trauma, or contradiction. What draws you to such complex emotional spaces? अब अगेन वी आर एक्टिंग, एंड आई विल नॉट से कि मेरी लाइफ इतनी कॉम्प्लेक्स चल रही होती है जितनी मेरे कैरेक्टर्स की लाइफ कॉम्प्लेक्स चल रही है. बट Thank God. या, बट कहीं ना कहीं आपने कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस किया होता है लाइफ में. आई एम नॉट सेइंग कि वो 100% रेप्लिका होना चाहिए उस इमोशन का, बट यू नो इट. एंड आई थिंक हर एक इंसान का लाइफ का एक्सपीरियंस अपना अलग है.
If I'll ask you about your school days, आपका अलग होगा. If you'll ask me about my school days, mine is different. So Yeah. I try to, take some experience of my life and put in my characters. And again, it's the same thing, uh, उधर से ही कहीं ना कहीं मैजिक क्रिएट होना शुरू होता है. एंड देन व्हेन यू हैव लाइक ग्रेट एक्टर्स and they support you, they don't judge you like why he's doing this or why he's saying something like this, because यहाँ पे ये सब चीजें चलती हैं. और मतलब उस चीज को बहुत ज्यादा हाईलाइट और अंडरलाइन करके नहीं बोला जाता है, बट ठीक है, लोगों को पसंद है to give directions. But in my case, I feel very safe when I'm around good actors, great people, good directors. So with the guidance and it's a मेरी जो मतलब it's a teamwork, Yeah. तो वो बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है उन सब चीजों से. So you work on script, you sit with your co-actors, workshops होती हैं, and आस्ते आस्ते you reach टू द पॉइंट जहाँ पे आप सोचते हो कि हाँ कुछ कैरेक्टर बन जाएगा. एंड देन यू स्टार्ट योर शूट एंड 3-4 days आफ्टर यू सी कि अच्छा हाँ अब नाउ थिंग्स आर हैपनिंग. Okay. So now with Search the Naina murder case, you're stepping into another layered world. Like आपके या सारे characters हमेशा बहुत layered रहे हैं, सारे. राइट. But I personally felt with the Naina the murder case, you're stepping into another world altogether. How did you prepare for this role, and what did you discover about yourself while exploring this new character? अब सी इट्स मोस्टली तो अगर आपका स्क्रिप्ट अच्छा लिखा होता है आपके कैरेक्टर को लेके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द स्टोरी, इट रियली हेल्प्स बिकॉज आप ऑन पेपर आपके पास ऑलरेडी मटेरियल है. एंड देन इफ यू पुट योर ब्रेन एंड आप कुछ थोड़ा बहुत भी काम कैरेक्टर पे करोगे, देन यू विल फाइंड अ वे आउट. एंड आई मेरे लिए वर्कशॉप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है. माय डायरेक्टर विजन इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक मैं चाहे जो भी सोच के आ जाऊं वो तभी वर्क करेगा कि अगर आप मेरे डायरेक्टर हो तो आप किस तरीके से सोचते हो उस कैरेक्टर के बारे में. तो वही मीटिंग्स एंड वर्कशॉप करके वी सी, एंड देन एक कैनवस होता है एंड वी स्टार्ट फिलिंग कलर्स. एंड देन इन द एंड वही पता तब भी नहीं होता. लाइक आई जस्ट वॉच माई शो रिसेंटली, मैं अभी 2 दिन पहले ही वापस आया, एंड देन वी फिनिश्ड इट विद मी एंड माई वाइफ. एंड आई स्टिल थिंक कि अरे देयर आर सो मेनी थिंग्स आई कैन डू इट बेटर. पीपल लविंग इट नाइस, बट देन फॉर मी मेरा यही होता है कि हाउ कैन आई डू दिस बेटर. चाहे वो बॉडी लैंग्वेज हो, चाहे वो किसी तरीके का डायलॉग हो. And yes, it's a learning, and then with good people, you do well. Okay. You've spoken about how working with Konkana Sen Sharma was a transformative experience for you. Can you recall a moment from set that changed your understanding of what it is really means to be, you know, like truly in the scene? Do you recall any moment like that? See, firstly, when I met her for the first time, it was a fanboy moment for me because Of course. great actress, Page 3, Wake Up Sid, these are the films I've seen. और मैं उनके कैरेक्टर को बहुत पसंद किया है. रिलेटेबल कैरेक्टर्स शी डज. एंड वही था कि उसके बाद जो वर्कशॉप हुई एंड शी वाज सो काइंड, एंड देयर वाज नो वॉल बिटवीन अस. तो एक वो कंफर्ट जोन क्रिएट करना, मतलब मैं अपनी तरफ से तो कर ही दूंगा, बट जो सीनियर होता है, इफ वी स्टेप इनटू अ मीटिंग and there's one big director sitting and then you step in, okay, you can fake it that I'm very comfortable but nervous सभी होते हैं, right? So but वो आप दूसरे का ड्यूटी बनता है to make you feel comfortable, because if we are working together, it's your duty, it's your responsibility, so that we can make everyone feel comfortable and वो काम अच्छे से हो जाए. And I think she did it very nicely. एंड उसके बाद कोई भी ऐसा वो चीज नहीं फील हुआ कि ओके इफ आई एम सेइंग सम यू नो इवन इन द लाइंस, अगर मैं उनको कुछ ऐसी चीज बोल रहा हूँ जो कि sarcastic है या वो टॉन्ट है, so she was taking it very nicely and replying in, and it was all in the characters then. All right. So since we are from Hyderabad, we have to ask you, have you been to Hyderabad? Yeah, twice. Twice. And how was your experience being with us in our city? It was amazing. It was only for work.
So very busy schedule उस time पे भी, and I went to one mall for some, shopping. I don't remember the name. Then I had biryani also. So yeah, it's a very nice city, calm. I will not say calm, but there are few places they are very calm. There are a bit, Yeah, well, Jubilee it's Hills and true. all. Yeah, it Yeah, feels yeah. good to roam around those places because I've been brought up in Chandigarh and Himachal. So वो उस तरीके की greenery और वो सब planned चीजें देख के अच्छा लगता है. हाँ, अच्छा Yeah. लगता है. Well, we hope to really see more of you. And you've, like, this boy who's come from Himachal and has walked straight into our hearts. We really, really hope to see more of you and hope to see you in some fun characters also. You've always done this Yeah, very serious. definitely. I also want to do it. Like Yeah, I it'll be think कि fun to see कॉमेडी you. कि कॉमेडी अच्छी कर लूंगा मैं. But वो भी आएगा मौका. आपने अभी आज बोल दिया तो it will happen for sure. I'm I sure it'll I happen. yeah We should totally will yeah it to the universe. I'm sure it'll yeah happen. yes. Thank you so much, Surya, for Thank you so talking to much, us Pallavi. today. Yeah, Thank you. it It was was my lovely pleasure. talking to you. Thank you for your Same. time. Take That's care. all Bye we bye. have on. Thank you. That's all we have on Deccan Chronicle Conversations today. Have fun. Take care.